Hello, welcome back guys. In this video we'll be solving this question, that is height of a binary tree. And this question you can find it on Geeks for Geeks practice section, and here we will be solving this question in the Java language. So if you are new to the channel, just hit the like and subscribe button and do share this video guys. Do share this video as much as possible. See, I make a video like I solve some questions or a problem walkthrough. I make a video, and I all of these effort I want to see the result, right? So if you don't like the video, just hit the dislike button, and if you like it, just hit the like button. But hit the like and subscribe button, okay, and unlike also. So this question I will be solving in Java language, and you can change the language from here, this part. So let's see. We'll keep this video shortened, just point to point. First we will understand the question, then we will see what should be our approach. Let's see. Here question is given a binary tree, find its height. Pretty simple, right? एक binary tree है, हमें उसकी height का पता लगाना है. So this is our binary tree. If I zoom out here, this height should be 2. First and second, फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल, द हाइट शुड बी 2, राइट. तो हम लोग हाइट को पता लगाते कैसे हैं, इसका एक बहुत ही सिंपल सा अप्रोच है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट्स सी दी अनदर एग्जांपल. गाइज, यू हैव टू टेल मी व्हाट इज दी हाइट. आउटपुट वहां पे दिया हुआ है, बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाई दैट आउटपुट, because 3 the first level, second level and third level, right? So this is how we find the height of a binary tree. So हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट साइड का हाइट ले लेते हैं, लेफ्ट नोड का हाइट ले लेंगे सब ट्री का, उसमें +1 कर देंगे. फिर राइट साइड का सब ट्री का हाइट ले लेंगे, उसमें +1 कर देंगे, तो हमें एग्जैक्टली एक बाइनरी ट्री का हाइट मिल जाएगा. सो बेसिकली कंडीशन ये होना चाहिए कि हमारा नोड नल नहीं होना चाहिए. लेट्स से अगर ये मेरा जो नोड है, दिस, लुक एट दिस पिक्चर हियर, जो ये मेरा नोड है, अगर ये नल हुआ तो इसकी हाइट तो 0 रहेगी ना, इसकी इसकी तो कुछ हाइट ही नहीं होगी फिर. सो द ओनली वन कंडीशन इज, हमारा जो नोड है वो नल नहीं होना चाहिए. अगर नल हुआ तो हम लोग 0 रिटर्न करेंगे, राइट. लेट्स सी. सो फर्स्ट बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सबसे पहले हम लोग कंडीशन लिख देते हैं, दैट इज इफ व्हाट, माय नोड इक्वल टू नल. अगर मेरा नोड नल के इक्वल है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है 0, राइट. प्रीटी सिंपल. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व. First let's make a variable int x, that is our height. This height, let's copy from here, this height. See, our height, left side node, right? Node dot left. See here, object is already created node, I am just using it, right? And with the help of dot operator I am calling the left side node +1, right? एंड इन सिमिलर वे हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे y. फिर वही हम लोग हाइट को कॉपी करा था, उसी को पेस्ट करो, नोड डॉट राइट. ठीक है, बस इतना ही करना था हमें. सी यहाँ पे ऑलरेडी एक गिवन कोड दिया हुआ है, सो यू कैन सी हियर. सो सिमिलरली +1. सो नाउ what we are going to do is we will directly return, यहाँ पे एक वेरिएबल भी बना सकते हैं, but like this you can directly return my first variable x my should be greater than y, right? And here if not x, here like this, right? तो जस्ट कुछ नहीं करना, बस इसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया है. हमने पहला वेरिएबल ले लिया और ये रहा हमारा दूसरा वेरिएबल. और इफ़ नॉट तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो ये कंडीशन होनी चाहिए. लेट्स सी, लेट्स होप कि ये कोड सक्सेसफुली कंपाइल एंड रन कर जाए. लेट्स सी व्हाट शुड बी दी आउटपुट.
या कंपाइलेशन कंप्लीटेड, राइट। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जस्ट लाइक दिस। हमें हाइट पता करनी थी बाइनरी ट्री की, जो हमने कर ली। जस्ट लेफ्ट साइड से हम लोग पहले निकालेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर राइट साइड से निकालेंगे, +1 करेंगे, फिर हमें उसका एक्चुअल हाइट मिल जाएगा। ओनली वन कंडीशन, हमारा जो नोड है वो नल नहीं होना चाहिए। अगर नल होता है तो हम लोग उसको 0 रिटर्न करा देंगे। लेट्स सी, हम लोग इट विल टेक सम टाइम, हाउ मेनी टेस्ट केसेस इज गेटिंग पास्ड। लेट्स होप 1120 test cases out of these. It is taking so much time, guys. Generally it don't take this much time, but let's see. I hope you understand till here. This question I explained. Let's run it again. Let's submit this question again. Yeah, attempt 1, right? So 100% correct, test cases is getting passed. So अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनाना है वो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो लाइक करो यार, डिसलाइक करो। अगर पसंद आया तो लाइक करो, बट बताओ कैसा लगा, एंड give me some suggestions that what are the thing that I should what are the changes. Like there is a lot of room for improvement, I know, and this is just a starting phase of this channel, so lot of improvement is needed. So you guys will help me out, just help me out, what are the changes that I should bring on this channel, right? So here in this channel मैं क्या कोशिश कर रहती है मेरी कि आपके साथ कोडिंग कर सकूं, गलतियां करूं, ताकि जो जनरल कॉमन मिस्टेक्स होती हैं वो करते रहूं, जो स्टार्टिंग में कोडर्स फेस करते हैं वो सब करूं, ताकि आप लोगों को देख के वो चीज़ आपको समझ में आ जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर चीज़, सिमिलर सिनेरियो आपके साथ होती है तो आप उस चीज़ को टैकल कर सको। सो देयर आर लॉट ऑफ मिस्टेक्स दैट आई डिड इन वीडियो, लाइक सम टाइम ऑन पर्पस, सम टाइम हो जाती हैं। सो लेट्स होप ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना। So let's meet in another video, guys. Happy learning. Bye bye.